Educational Guru 786. Today in this video, we are going to start our history chapter for class 10, that is print culture and the modern world, which is a very big and lengthy chapter. So we are going to start this chapter because this is very important from the exam point of view, because 5 to 6 questions from, or 5 to 6 marks carries in this chapter from every question. So we have to read this chapter line by line by NCERT. So let's start and let's go. So first of all, print culture. What do you mean by print culture? मतलब printing का जो भी हम we see all the printouts nowadays, so that why these things are happening and why do we use these things, why do these things have grown so much that once we want to any types of printouts, we just take our phone out and we just on our printers, and we can give command and just take out all the printouts, and how this can happen and how this started in Europe, America and all that countries. ठीक है, so we are going to read about this in this chapter. ठीक है, so print culture का आपको समझ आ गया है. ठीक है, ऑलराइट. So that modern world अभी हमने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आई थिंक यू गाइस हैव डन, माइट हैव डन. सो उसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी. व्हाट इज़ मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि अब हम इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज वी मस्ट नो दैट हाउ प्रिंट emerged in our lives. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो मेन थिंग क्या बात है कि जो भी हम आजकल प्रिंट्स पढ़ते हैं, और जैसे लिटरेचर, वी सी इमेजेस, वी सी न्यूज़पेपर्स. ठीक है, न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, पब्लिक डिबेट्स होती हैं, अपीयर्स इन प्रिंट. ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स यू मस्ट सी. ठीक है, वो सब प्रिंट का कमाल है. वो हम मतलब हाथों से अगर लिखने जाएँ, सो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड ऑल द लेबर इज़ नीडेड, मोर लेबर इज़ नीडेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो प्रिंट था वो ईस्ट एशिया से एमर्ज हुआ. ठीक है, टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इंडिया. ठीक है, ईस्ट एशिया से एक्सपैंड हुआ, चाइना, कोरिया एंड जापान से एक्सपैंड हुआ. ठीक है, सो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना, जापान एंड कोरिया में प्रिंट इमर्ज हुआ. ठीक है, दैट वाज अ हैंड प्रिंटिंग. अभी जैसे हम कंप्यूटर्स से कमांड देते हैं एंड प्रिंट्स निकल आते हैं ना, दैट वाज नॉट अवेलेबल. दैट इज़ अ मैकेनिकल टाइप ऑफ प्रिंटिंग ना. जो अभी हो रहा है, हम जो प्रिंट्स कर रहे हैं नाउ डेज, दैट इज़ मैकेनिकल टाइप ऑफ प्रिंटिंग. दैट इज़ प्रिंटिंग प्रेसेस समटाइम्स नीडेड टू प्रिंट अ लॉट ऑफ लार्ज बुक्स. ठीक है, बट वी आर कंसिडरिंग दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग एज हैंड प्रिंटिंग बिकॉज अर्लियर देर वॉज नो मशीन्स एंड नो अदर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट लाइक दैट. ओके, so hand printing was there from AD 594 onwards. ठीक है, books in China printed by rubbing paper. Okay, so कोई भी पेपर होता था, paper was made by cutting the very thin strips of woods. wood से पेपर बनता था, but that was so much we can say soft and porous that it can break down. ठीक है, so क्या होता था, for example this is a paper and against it a wood block. For example I have cut a wood block like, just a minute. For example this is a paper, okay, and I have a wood block. ठीक है, अब इस wood block में क्या होगा, वी आर गोइंग टू फिल अ कलर. ठीक है, मान लीजिए अगर इसमें मैंने कोई भी इंक वगैरह इसमें डाली है, एंड आई विल पेस्ट इट ऑन इट. ठीक है, इसके ऊपर पेस्ट किया एंड देन लेटर्स विल अपीयर. सो इसको कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. ऑलराइट, so yeah, so as both of the sides were thin, of the porous sheet could not be printed. दोनों साइड, जैसे हम बुक खोलते तो ऐसे बुक आती ना, सिर्फ एक साइड उसकी प्रिंट होती थी, इसका पिछला पेज प्रिंट नहीं होता था. ठीक है, जैसे इसका आपको एक एग्जांपल दिया था, ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड. अब इसमें क्या होता था, वो जैसे आपको, ये तो दूसरी बुक है, मान लीजिए जैसे पेपर को हम, एक पेपर है, हम उसको ऐसे 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 कर देते ना, उसको फोल्ड कर देते, तो इसकी ये साइड पे हमने लिखा है तो हम इस साइड पे नहीं लिखते थे. मतलब इस साइड पे लिखा है, पीछे वाली साइड पे, अगली साइड पे नहीं लिखेंगे, देन नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे. मतलब हमने उसका बैक पेज यूज़ ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ stains of the ink that used to left on the back side of the paper. Okay, so skilled craftsmen could duplicate. Skilled craftsmen कौन होते थे, जो calligraphy, they used to do calligraphy and they used to write in very beautiful handwriting so that those prints could be printed in more papers. ठीक है, but earlier first of all wood block printing and hand printing होती थी. ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आना शुरू हुई, that was technology.
Then is the imperial state of China was for a long time the major producer of print material. China में print इतना क्यों होता था? There were two reasons. में से पहला reason ये है कि huge bureaucratic system, मतलब कि उधर civil services के examinations start हो रहे थे, and because of that textbooks were needed for the examination preparation. ठीक है, so a number of books increased in China, and that was ordered by government of China, means imperial state means government. ठीक है, from the 16th century में the number of examination candidates went up. अब examination ज़्यादा होएगी तो print का volume भी ज़्यादा ही हो जाएगा. ठीक है, by the 17th century as urban culture bloomed in China, urban culture की वजह से भी चाइना में बहुत ज़्यादा print बढ़ गया. That is because urban culture leads to more leisure time. Leisure means lazy time. ठीक है, because उधर काम थोड़े से कम होते थे. ठीक है, काम कम होते थे, salaries used to be more. Okay, so there was more time, more free time for people. ठीक है, they used to do reading at those times. ठीक है, वही इधर आप पढ़ोगे. By the 17th century urban culture bloomed in China. The uses of print diverged. So print was no longer used by just scholars, officials. सिर्फ scholars की ही मदद नहीं करता था print. It used to help merchants to collect information for the trade. ठीक है, then रीडिंग इंक्रीज हो गई क्योंकि लेजर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई. न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फ्रिक्शनल नरेटिव्स. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट होने शुरू हो गए. दैट वर फ्रिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्रीज, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीसेस, रोमांटिक प्लेज एंड ऑल. ठीक है, रिच विमेन बिगेन टू रीड. अमीर औरतें पढ़ना शुरू हो गई. जो औरतें पब्लिश करना चाहती थी उन्होंने पोइट्रीज एंड प्लेस पब्लिश करने शुरू कर दिए. वाइव्स ऑफ स्कॉलर मीन्स पीपल हु वर वेरी मच एजुकेटेड एंड सॉर्ट ऑफ सेंट्स और प्रीस्ट टाइप ऑफ एजुकेटेड पीपल्स. ठीक है, ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर वर्क्स एंड कर्टेसियंस रोट अबाउट देयर लाइव्स. ठीक है, द न्यू रीडिंग कल्चर. So the new reading culture was accompanied by a new technology. New technology क्या आई? Western printing techniques and mechanical presses. Western printing techniques. Now this is a very important point because वेस्टर्न कल्चर की वजह से ही प्रिंटिंग में एक नई जान आ पाई. ठीक है, प्रिंटिंग became something new types of thing. ठीक है, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century as western powers established their outputs in China. अब वेस्टर्न पावर्स जो थी, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, दे हैड अ रोल in printing. How? This can be a question. ठीक है, so you have to note it down कि in China they made their hubs for or outputs for printing of books. ठीक है, and new technology of western countries and their mechanical presses were imported in China in late 19th century. Okay, and Shanghai. ठीक है, this is the word that I was spelling. Shanghai became the hub of new print culture. ठीक है, शंघाई एक नया हब बन गया न्यू प्रिंट कल्चर के लिए जो वेस्टर्न स्कूल्स को केटर करता था. Shanghai was a place of China that acts as a hub for western countries, so that their schools must run accurately. Okay, from the hand printing there was a new gradual change to mechanical printing. Now print in जापान में प्रिंट का क्या मतलब कैसा रहा, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो बुद्धिस्ट मिशनरीज मीन्स जो बुद्धिज़्म का प्रचार करने, वी कैन से persons who were religious and used to spread their religious ethnics values to they used to taught all those values of their culture to others so that they could lead a healthy and honest life. Okay, so from China introduced hand printing technology into Japan. अच्छा, अब ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना से जापान तक प्रिंटिंग कैसे पहुंच गई? जापानीज बुक एक थी. ठीक है, AD 868 में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो जापान में, ये बुक कहाँ से पहुंची? बिकॉज अर्लियर देयर वाज नो बुक्स इन नो प्रिंटिंग प्रेस और नो प्रिंटिंग कल्चर और वी कैन नो प्रिंटिंग आइडिया in Japan. So how Chinese ideas and how Chinese books reached in Japan and named as Diamond Sutra? This was because this was the evidence. Diamond Sutra was the evidence that Chinese had traveled to Japan for their religious expansions, for their religious values exchange. So they also spread religion. Apart from spreading religion, they also spread different types of ethnics, values, and also the books
printing methods in Japan. Clear? सो जापान में अराउंड इसकी टेक्नोलॉजी शुरू कब हुई 768 टू 770 AD तक, ठीक है. एंड डायमंड सूत्रा हमें कब मिली 868 AD में. सो डायमंड सूत्रा वॉज कंसिस्ट ऑफ 6 शीट्स. डायमंड सूत्रा जो थी उसमें 6 शीट्स होती थी. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. या सो 6 शीट्स होती थी डायमंड सूत्रा में टेक्स्ट की, और वुड कट इलस्ट्रेशंस. मतलब सांचा होता है ना, सांचा यू नो जैसे मेहंदी बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस के लिए पहले से कट रहता है, एंड व्हेन यू जस्ट पेस्ट दिस सांचा ऑन योर हैंड. सो जब आप मेहंदी इसके ऊपर लगाते हो तो मेहंदी का सिर्फ इतना पोर्शन ही आपके हाथ पे ट्रांसफर होता है, एंड ऑल द रेस्ट एक्स्ट्रा waste is, you know, you can just take that sancha out and your print is ready in your hand. So that type of sancha we can say was woodcut illustration, means wood का सांचा बनाया जाता था, ठीक है. पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स. अब पिक्चर्स वगैरह भी प्रिंट होनी शुरू हो गई थी. कहाँ कहाँ पे? टेक्सटाइल्स पे. टेक्सटाइल्स मतलब जो भी यू नो क्लॉथ्स एंड ऑल, वो कहते हैं ना कॉटन टेक्सटाइल्स, मीन्स कॉटन का क्लोथ्स के टेक्सटाइल्स है ना. वैसे ही दे यूज टू से दैट टेक्सटाइल्स इज इक्वल्स टू टेक्सटाइल्स मीन्स सेम एज क्लॉथ्स टाइप ऑफ थिंग, ठीक है. सो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर दे यूज टू प्रिंट पिक्चर्स, पेपर मनी इन पे, ठीक है. मिडीवियल जापान. मिडीवियल व्हाट डू यू मीन बाय मिडीवियल? गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मिडीवियल का मतलब क्या है? मिडीवियल का मतलब है द पीरियड और द सेंचुरीज फ्रॉम 13th century टू 15th century, ठीक है. 13th to 15th century का जो पीरियड टाइम होता है उसको हम मिडीवियल पीरियड बोलते हैं, ठीक है. सो जापान में उस टाइम पे क्या था? पोएट्स एंड प्रॉस राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश. पोएट्स एंड प्रॉस राइटर्स. अब when books were expanding, books were in abundant numbers. Abundant means in a lot of numbers or plethora numbers. So the increase of books led to the increase of poets and prose writers, ठीक है. So books were cheap because books were cheap and abundant. अभी मैंने abundant का मतलब समझा दिया है, ठीक है. So printing of visual material led to the interesting publishing practices. So अब क्या हुआ? visual material भी print होना शुरू हो गया. So people were more kind of interested. Means अगर हम कोई भी new book purchase करें, we used to see its pictures first, how the book is having the designing or what types of pictures the book has. So the people of that Japan were also interested about what is printing as a visual prints, ठीक है. So in large 18th century, in the flourishing urban circles at Edo is Tokyo nowadays, ठीक है. Edo was a earlier name of Tokyo. So illustrated collections of paintings. You know Tokyo, you have heard about this Tokyo in your Shinshan. So it's like connected to that. Okay, this is an example of Edo ki collections of paintings which depicts elegant culture involving artists. Means Edo में कुछ ऐसी बुक्स इलिस्ट्रेट हो रही थी. इलिस्ट्रेशंस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल मटीरियल दैट इज प्रिंटेड ऑन द बुक्स वॉज रिलेटेड टू द कल्चर, वॉज रिलेटेड टू द आर्टिस्ट, ठीक है, हु मेड दैट एंड ऑल. courtesans and tea house gatherings. Tea house gatherings used to be the gatherings which were religious or cultural in Japan. They used to drink tea at those gatherings and talk a lot. Okay, so libraries and bookshops were packed with hand printing material. Now there were libraries and bookshops there, then they were also filled with hand printing material, ठीक है, we can say. So books on women, musical instruments, calculations, tea ceremony, flower arrangements. Now Kitagawa Utamaro was born in Edo in 1753 and his main work was to introduce ukiyo. Ukiyo was a type of art form, printing or painting in which pictures of the experiences of a world was drawn or printed, ठीक है. So depiction of ordinary human experience, जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसके रिलेटेड प्रिंट्स, विजुअली प्रिंट्स जो भी हम इमेजिन करते हैं उन चीज़ों की प्रिंट्स दे यूज टू मेक. सो व्हाट हैपन कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने बताया. अर्बन वी कैन से अर्बन एरियाज़ के बारे में उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ही यूज टू मेक. देन दीज प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्प्रेरी USA एंड यूरोप. USA और यूरोप में ये प्रिंट्स आ गए एंड इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस किया. इन्फ्लुएंस मीन्स टू get into the confidence. Okay, so Manet, Monet and Van Gogh भी कह सकते हैं वैसे. So publishers like Sutia Juzaburo. Okay, so this is a very hard name to pronounce for everyone, I can say. So yeah, identified subjects and commissionates artists, ठीक है. अब इधर हो क्या रहा था कि द स्किल्ड वुड ब्लॉक कैरवेर क्या होता है? कैरवेर इज अ पर्सन हु यूज टू प्रिंट बाय यूजिंग
the wood blocks में क्या करते थे, they used to cut those wood blocks according to their will or according to the designs or according to the shapes which they want to make, and they used to use those सांचा टाइप ही हम इसको बोल सकते हैं, but they used to cut those woods and then they used to do all sort of printing there. ठीक है, so this process was called carvering and wood block केवर के थ्रू होती थी, carver से. ठीक है, so pasted the drawings on a wood block and carver printed a block to reproduce painter's line. In the process original drawing destroy हो जाती थी और सिर्फ printed drawings ही रहती थी. So now a box here, आपको ये picture you can see, this picture depicts कि इधर एक man बैठा है and he is watching outside the window, snowfall होती हुई देख रहा है, and a women and a lot of women are making, someone is making tea, someone is doing some sort of works. ठीक है, so all are doing some sort of works and one picture was there. This picture depicts that this is the page from the Diamond Sutra. ठीक है, जो 6 हमने अभी पढ़ा था ना कि 6 उसकी sheets थी Diamond Sutra की, वही बुद्धिस्ट की Diamond Sutra. Now this is a painting, you can see these all are making there is a king who has hired scribers means the people who used to copy manuscripts. ठीक है, manuscripts, this topic we are going to cover in a next video, but let's see first. Okay, so this is a person who is just instructing this person to do like this and this and this. So book making before the age of print. This is a picture before the print. ठीक है, जब प्रिंट से बुक्स नहीं बनती थी उसके पहले की पिक्चर है, एंड दिस डिपिक्ट्स की हैंड रिटन प्रिंटिंग होती थी. हैंड राइटिंग, हाउ कैन वी से इट अ प्रिंट? ओके, इट्स लाइक हैंड प्रिंटिंग नहीं हो सकती, इट्स हैंड राइटिंग सिस्टम. ओके, सो फ्रॉम अखलाक आई नासिरी 1595 में, दिस इज़ अ रॉयल वर्कशॉप इन 16th century में थी ये, और इसमें प्रिंटिंग इंडिया से पहले ही शुरू हो गई थी. दिस प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड बिफोर इंडियाज़. ठीक है, एंड इसमें क्या बोला है कि कोई बंदा उसको, मतलब कुछ लोग, सम पीपल आर डिक्टेटिंग द टेक्स्ट, डिक्टेशन होती है ना, वैसे ही डिक्टेट कर रहे हैं टेक्स्ट को. some persons are writing that dictated text and some are illustrating it. Illustrating means to draw or to do the designings for that text. ठीक है, for example किसी ने picture बना दी, some has made some images, like for example flowers के ऊपर कोई dictate कर रहा है, so someone is writing about flowers information, what is the chemical nature of this and that, and then someone is pictures of flowers, some beautiful pictures of flowers or which type of flower this is and that. So it's about like that. ठीक है, art of writing and illustrating by hand was important in the age before print. I think about, okay, this is not needed now. Okay, so am I clear guys? I think I have taught a lot today. So in our next video we are going to cover this print comes to Europe.